नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिले में 76वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय आयोजन वापी के बलीठा स्थित श्री के.एच. देसाई पुरुष अध्यापन मंदिर कॉलेज के मैदान पर हुआ। इस अवसर पर राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री कनुभाई देसाई ने ध्वजारोहण कर देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर मंत्री कनुभाई देसाई ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा वापी को महानगर पालिका का दर्जा दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2025 से वापी नगर पालिका को महानगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद वापी का विकास तेज गति से होगा। जिसके बाद मंत्री ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया। वलसाड जिला पुलिस के पुरुष प्लाटून, महिला प्लाटून, होमगार्ड महिला और पुरुष समेत 7 प्लाटून द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसमें डुंगरी पुलिस स्टेशन का पुरुष प्लाटून प्रथम स्थान पर रहा। सरकार की जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा 9 आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें समेकित बाल विकास योजना की झांकी प्रथम स्थान पर रही। जिले की कुल 7 स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें श्री सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग, मेधावी विद्यार्थी, खिलाड़ी, विशिष्ट व्यक्तियों और 108 इमरजेंसी सेवा समेत विभिन्न विभागों के कुल 19 अधिकारी, कर्मचारियों और मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शौर्य पर्व के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा गुब्बारा उड़ाया गया। राष्ट्रीय पर्व के जिला स्तरीय आयोजन के उपलक्ष्य में विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए का चेक कलेक्टर को सौंपा गया। मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कॉलेज के मैदान में वृक्षारोपण भी किया गया। इस आयोजन में लोकसभा के मुख्य सचेतक और वलसाड डांग के सांसद धवल भाई पटेल, वलसाड के विधायक भरत भाई पटेल, जिला कलेक्टर नैमिष दवे, वापी महानगर पालिका के आयुक्त योगेश चौधरी, वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर अनसुया झा, पारडी प्रांत अधिकारी नीरव पटेल, जिला संगठन प्रमुख हेमंत कंसारा, पूर्व सांसद डॉक्टर केसी पटेल समेत उच्च अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ગરવી ગુજરાતના સર્વે ભાઈઓ અને બહેનો, 70મા પ્રજાસત્તાક પર્વની આપ સૌને શુભકામનાઓ પાઠવું છું। ગુજરાતના ગૌરવવંતા ભાઈઓ બહેનો, સ્વતંત્ર સેનાનીઓ, દેશ વિદેશમાં રહેતા સૌ બાંધવોને પ્રજાસત્તાક પર્વની અનેક અનેક શુભેચ્છાઓ। પ્રજાસત્તાક પર્વના પાવન પર્વે દેશ માટે પ્રાણની આહુતિ આપનાર નામી અનામી સ્વાતંત્ર્ય વીરોને હું કોટી કોટી નમન કરું છું। મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર પટેલ, સુભાષચંદ્ર બોઝ અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા અનેક મહાપુરુષોથી માંડીને નાના નાગરિકોએ પણ રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યથાશક્તિ ફાળો આપ્યો છે। આજના અવસરે આ તમામ પ્રત્યે આપણે કૃતજ્ઞતા અને આભારની લાગણી વ્યક્ત કરવી। આપણે ઔદ્યોગિક નગરી વાપીની વાત કરીએ તો સમગ્ર દેશના વિવિધ રાજ્યના લોકોને રોજગારી આપી વાપીએ મિની ઇન્ડિયા તરીકે નામના મેળવી છે। આવી આપણી વાપી નગરીમાં આજે 76મા પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી, સાંસદશ્રી, માનનીય ધારાસભ્યશ્રી, તાલુકા જિલ્લાના અગ્રણીઓ, પૂર્વ સાંસદશ્રી, जिला कलेक्टर श्री, जिला विकास अधिकारी श्री, जिला पुलिस अधीक्षक श्री, अधिकारी गण, सज्जनों, सन्नारीओ, पुलिस जवानों, शाळाना बाळको सहित तमाम ने प्रजासत्ताक दिननी शुभेच्छा पाठवुं छुं। आजना पावन पर्वे आपणे बंधारण अपनाव्युं हतुं। 26 जान्युआरी 1950 ना दिवसे आपणुं बंधारण एक जीवंत अने प्रगतिशील दस्तावेज छे। आपणा बंधारण द्वारा सामाजिक न्याय अने सर्वसमावेशी विकास साथे संबंधित घणा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों आपणे प्राप्त कर्या छे। આપણું બંધારણ
આપણા લોકશાહી પ્રજાસત્તાકનો મજબૂત પાયો છે. આપણા બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં રજૂ થયેલા આદર્શો એકબીજાના પૂરક છે. તેની પ્રસ્તાવના આપણે ભારતના લોકો એટલે કે વી પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા શબ્દથી શરૂ થાય છે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહીનો પ્રાણ છે. આપણું બંધારણ વિશ્વ બંધુત્વ અને સર્વ કલ્યાણની ભાવનાના પાયા ઉપર રચાયેલું છે. બંધારણમાં દરેક નાગરિકને મૂળભૂત હક્કો અને ફરજોનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે સર્વસમાવેશી વિકાસની આધારશિલા છે. હું વિશ્વાસ સાથે કહી શકું છું કે 75 વર્ષની લોકશાહી રાષ્ટ્ર તરીકે આપણી યાત્રામાં આપણે પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્ર તરીકેની ક્ષમતામાંથી ઉજાગર નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. લોકશાહીના આ સંસ્કાર આપણી ભાવિ પેઢીમાં વધુ સુદૃઢ બને અને એ માટે પુરુષાર્થ કરવો એ આપણા સૌની ફરજ છે. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।